Assalamu alaikum everyone. You are tuned into E. Fatima Academy, the online education platform. This is your host Ali Raza Khan and you're watching another exciting episode of Educatify with Ali Raza. Keep watching. Welcome back to the show, ladies and gentlemen. Today we are back with another amazing guest. The name of that person is Dr. Sanjay Kumar. Let me tell you who Dr. Sanjay Kumar is. Dr. Sanjay Kumar is basically a medical officer at a health department. He's also the founder and co-founder of Waves of Kindness, a global platform that is promoting kindness, peace, harmony around the globe. He has also been a keynote speaker at World Spiritual Celebration. Along with his contribution in the field of medicine, he's a social activist with a vast experience as an international speaker. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर. हमें पता है कि आज के दिनों में बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी फाइंड पीस इन द केओस. और इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर संजय मौजूद हैं स्टूडियो में, जो हमसे बात करेंगे अबाउट व्हाट अकॉर्डिंग टू देम इज माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर. So without doing further, let's go on and let's welcome our honorable guest, Dr. Sanjay Kumar. Thank you so much for joining us, sir. We welcome you to E. Fatima Academy. Yes. My first question to you is, according to you, what is mindfulness? आप इस term mindfulness को कैसे define करते हैं? Back to you, sir. First of all, thank you so much, Ali Bhai, for such a lovely introduction. It's always an honor to share the screen with you, the wonder boy of Pakistan. You are proud for Pakistan. You are presenting Pakistan on many international platforms. So you are doing a wonderful job. Thank you so much for inviting me to your just wonderful platform. Now, question: what is mindfulness? Mindfulness to me is actually our ability, our human ability to be in the present. What we are, where we are fully aware about it, what we are doing. So this is actually a mindfulness. We do not overly reactive or overwhelm what's going around us. So this is actually a mindfulness from my side. Back to you, Alira. Thank you so much, Doctor, for sharing your valuable insight on mindfulness. According to me, mindfulness it's like a practice. It's the mindfulness कुछ techniques नहीं है, बल्कि I think being mindfulness is about living. It's all about being. If you don't have a peace of mind, if you don't have a healthy peace of mind, then we need to work on it. We need to improve ourselves in terms of development. और जब बात आती है माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर की, इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है और जो हमारा बिहेवियर होता है वो माइंडफुलनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है. बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस आती हैं. वी डेवलप ट्रिमेंडसली if we work on ourselves, we work on our minds, on our mindsets. तो इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल की तरफ बढ़ते हैं. डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया माइंडफुलनेस. यू वेरी वेल एलैबोरेटेड द टर्म माइंडफुलनेस. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो माइंडफुलनेस है इसको हम कैसे प्रैक्टिस करें? व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस टू एक्सरसाइज माइंडफुलनेस? ओवर टू यू, सर. Doctor, you are muted. Okay, sorry for this. Thank you so much. Very wonderful question. As we are living in a 21st century, an internet world,
So we are seeing that a lot of application are provided by different specialists for mindfulness regarding mindfulness. But for me, it is simple thing that where this place where we find ourselves, where we find our awareness that what are where we are, what we are doing, we are aware about thoughts, we are aware about feelings, we are in that moment, we are in that particularly that present moments. So for me that is mindfulness. We can simply do this by putting our earphone on our ears, open our eyes or close our eyes, that depend on us. And uh, without in the indulging in our thoughts and our feelings, just neutralize and observe your thought as a third person, like we are listening a commentary of cricket. Try this practice daily 20 to 30 minutes early in the morning without involving, without becoming the part of that flow of thoughts. We all know that when we sit down, a lot of thoughts, chain of thoughts came our mind one after one, one after one. But what we have to do, we have to do nothing. We have to do just sit calmly and observing that thought without being part of that thought, without being flow in that part. So by doing this, within a few days, what we see in we see in our us that we have a strong observation. We are more confident now to become aware about our present moment, aware about ourselves, and aware about our thoughts, aware about our feelings, and these are the thing actually that works more. The only simple application take a time 20 to 30 minutes early in the morning, where even there is a no voice of fan, there is a no voice of AC, there is a no voice of anything. Just sit calmly. It's depend on you whether your eyes are open, whether your eyes are closed. It purely depend upon you. If you still feel some voice, then put your earphone on your ears and sit silently. So why we put earphone on our ears? Just to avoid ourselves from any external voice distraction. So this is just simple practice we have to do. I must say that you don't need any other meditation, you don't need any other application. Just apply this simple. And I must, what I learned, what I experienced in my life through this simple application, I must share. I'm taking guarantee of this, that this will change your life. This will help you to become more aware about your present moment. And this is what all about mindfulness. Mindfulness is all about we have to live our present moment. Back to you. Wow, very well articulated, Dr. Sanjay. Thank you so much for putting such a valuable light on some applications to practice and pragmatically apply mindfulness. Within that being said, you very rightly said that being in the present movement and that earphone experiment that you told us, it's very usual, it's very helpful, and I have tried this at home. At first you do feel okay, what am I doing having earphones in my ear, and this may sounds a bit absurd and silly to a lot of people, but it's very important, and it does help, is very helpful and very useful to create a healthy relationship with you and your mind, because it is rightly said that a healthy mind means a healthy life. So it's very important that you take out 20 to 30 minutes of your busy life in the morning earlier, so that you get that refreshing vibe. Now doctor, आपकी मैंने स्पीच सुनी, आपकी मेरे तबसरा सुना माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में. आई नोटिस वन थिंग,
आपने मेडिटेशन को माइंडफुलनेस से इंटररिलेट किया. तो द क्वेश्चन इज कि हाउ इज माइंडफुलनेस इंटररिलेटेड टू meditation? Is meditation necessary for mindfulness? That's the question. Over to you. Sound very, very amazing question. Thank you for asking such a wonderful question. Now, question arises that mindfulness and meditation are associated with one another. I once again repeated to you that I am not believing that by externally focusing yourself on some part of your body, whether on your forehead at the point between your two eyes, or focusing on your breath, inhale and exhale. This meditation actually, by doing this, by externally forcing this, it will not help you to reach your inner soul, but it create a situation like a hallucination. The condition is called as a ecstasy. And ecstasy situation, in ecstasy situation we feel that we are with the god, we are interrelated with god, and so on. Don't don't do the forcefully medicine. First thing is just sit calmly, go and flow with the nature. What I explained previously, that we have to do nothing. We have to come, get up early in the morning, sit on the chair comfortably without thinking anything. We have to take care of two things. One thing is there should be no any external voice. If we concentrate and we can sit silently without any external pressure, uh, if we do not need any earphones, so avoid earphones. If we think that we can divert easily on even a small external voice or something, then please wear your earphone. So uh, it help you to avoid from distraction, and you have to do nothing. Just sit calmly with the nature. The nature goes what the nature want, and just listen. Just sit down and don't interrupt your thoughts. There are chain of thoughts, chain of running in your mind, come one after one. You have to do nothing. Just observe like a neutral person, as we are observing when two people are talking. We are standing or sitting beside them and just looking what they are talking and just listening them. So we have to do just this. Nothing we have to do. If we want to make ourselves better and better, I think this practice is better than any meditation, anything. Because by doing this, we may understand the importance of our present moment. We may understand that we may have a great observation. We become the more better version of ourselves. And when we become aware about our everything, even our thoughts, our feelings, our conditions, where we are, what we are doing, this is all uh, about mindfulness. So, as you said, that mindfulness and meditation are associated. Many people are intermixed it, but I am not. Uh, um, I am not in the favor of this. Whether mindfulness, whether meditation. If we do forcefully by focusing on any of the body part, they, they will not work for us. If we start focusing on that point, if we start focusing on our breathe in and breathe out, it will not help us, but it will be a bad for us. It make us in a condition like a hallucination that ecstasy. So please don't forcefully do any meditation. Just be what you are, where you are, flow with the nature. This is all. That's it. Wow, that was a very brilliant answer. I mean, you very well said that we must not forcefully convince ourselves to do any sort of meditation. We must focus on what's right for us and what's
really convenient for us, and what's really suiting us. So it's important that we recognize our conventional ways of being comfortable and our conventional ways of being happy and positive. um, or इसी तरह I think what you define is basically emotional intelligence, because sometimes लोग जो है ना कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें बताया जाता है कि ये आप इस तरह की मेडिटेशन करें, you do this and you do this and it will really help. But what happens is the repercussions, the consequences are very awful and atrocious, because first of all, when you are working on something and you are giving it your heart, your soul, and you have a belief system, but when you realize that what you've been doing from so long is not helpful, it's not helping you, then your depression, your anxiety, it gets aggravated. It does not it does not get lower, it does not help you in any way, but instead it makes things worse. It accumulate worse things to occur. So it's important that we recognize what's good for us. uh, आपने अपने आंसर्स में कुछ कुछ तो हमें बेनिफिट्स बताए इस चीज के, लेकिन आई वांट टू आस्क यू डॉक्टर कि माइंडफुलनेस होने के व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स, जो बेसिक हमारे पास बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं माइंडफुलनेस के, वो क्या हैं? इस पे आप थोड़ा सा अपना इंसाइट दें. ओवर टू यू. अच्छा सवाल है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? As I already mentioned about the benefit, that when we understand the mindfulness, when we understand, okay, जब हमने माइंडफुलनेस के बारे में पता चलता है, जब हम माइंडफुलनेस पढ़ते हैं, तो माइंडफुलनेस क्या कहता है? आपको अपने प्रेजेंट के बारे में, जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस है. ये माइंडफुलनेस है. जिस मोमेंट में, जिस जगह पे, जिस कंडीशन जहाँ हम हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जैसे अभी देखें ना, ह्यूमन माइंड है. जब अभी मैं यहाँ हूँ आपके साथ, अक्सर कहते हैं कि मेरा जिस्म यहाँ है लेकिन मेरे ख्याल तो कराची में चल रहे हैं, मेरा दिमाग कराची में है, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिमाग वहाँ पे है. तो ये क्या है कि हम माइंडफुलनेस नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमें हमारे प्रेजेंट सिचुएशन जो जहाँ पे हम हैं उसका हमें पता नहीं है. अभी देखें, हम यहाँ हैं तो हमारा दिमाग भी यहाँ पे होना चाहिए, हमारी सोच भी यहाँ पे होनी चाहिए, हमारा फोकस भी यहाँ पे होना चाहिए. ये है माइंडफुलनेस. तो माइंडफुलनेस से क्या क्या हम सीखते हैं? माइंडफुलनेस हमें मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट में लाती है, इसी मूवमेंट में लेके आती है जिस मूवमेंट में हम हैं. हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी करते हैं कि हम छोटी सी छोटी चीज को नोट करते हैं. और सबसे ज्यादा माइंडफुलनेस, जब हम प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं तो हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं. जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, क्योंकि खुद की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है. जब तक हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, तो जैसे हमारे में क्या है कि इंसान का मन जो है ना, वो एक चंचल है. चंचल मतलब एक तरीके से एक हॉर्स आप ले लें, बिगड़ा हुआ हॉर्स, उसको कितना मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है. तो हमारा दिमाग भी उसकी तरह है, बड़ी मुश्किल से उसको जो है ना पकड़ पकड़ के वापसी लाइन पे लाया जाता है. लेकिन ये बड़ा मुश्किल है होता है कि चंचल मन मतलब वो भटका रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर. तो इस तरीके से वो अपना काम करता है. तो एक्चुअल में माइंडफुलनेस के जो फायदे में सबसे पहले आ जाता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, हमें अपने बारे में अवेयरनेस होती है, हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं. हम कौन है, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ हैं. खुद की इम्पोर्टेंस पता चलती है, खुद से प्यार करते हैं, खुद की वैल्यू का पता होता है. तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस. जब इंसान खुद के बारे में अवेयर होता है, खुद की वैल्यू का पता होता है, खुद के बारे में बेहतर जानता है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाती हैं. फिर वो आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे आपकी सोशल हो, फिर वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा. देखिए ना कि माइंडफुलनेस
एक तो फोर्सफुली मेडिटेशन के साथ हमने बातचीत की। अब ये है कि अब देखें, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, 5 सेंसेस, ठीक है, ये हमारा एक पूरा अपीरियंस है। तो बॉडी जो है दिमाग के बगैर कुछ नहीं है, दिमाग बॉडी के बगैर कुछ नहीं है, और ये दोनों सेंसेस के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। बॉडी की नीड क्या है? 2 नीड है, खाना और, और दूसरा भी खाना, सेक्सुअल डिजायर। लेकिन ये सिर्फ बॉडी है, बॉडी की नीड है, लेकिन प्लेजर कहाँ से मिलता है? दिमाग से मिलता है, ठीक है ना। अगर हमें कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, 5 सेंसेस में किसी भी सेंसेस पे अगर यहाँ पे कोई चीज लग गई तो दर्द होगा। ये तो क्या मतलब, दर्द फील कहाँ से होगा? नर्व से होगा, दिमाग तक जाएगा, मतलब ये पेन वाले रिसेप्टर है, उन्होंने अपना एक काम कर लिया। अब जो माइंडफुलनेस हमें हेल्प करता है, वो हम सेल्फ से, हमारा जो सेल्फ ईगो है, नफ्स है, नफ्स में ये तीनों चीजें आगे, इससे ऊपर है। वो क्या है? हमारा रूह, सोल। सोल जो है ना, माइंडफुलनेस हमें उस स्टेट पे लेके जाता है। और उस स्टेट पे पहुंचना, जिसे हम हायर कॉन्शियस कहते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारा जो सेल्फ ईगो, ये नफ्स जो है, वाटर सेल्फ, उसमें 3 पार्ट्स आते हैं, बॉडी और हमारे 5 सेंसेस, हमारा माइंड, और जो इससे भी ऊपर एक चीज है जो है, वो हमारा सोल है। सोल इज इमोर्टल, ठीक है। हमारा रूह जिसे कहें, हम जिसे आत्मा कहते हैं, वैसे रूह है ना, तो वो सोल जो है ना, वो इमोर्टल है। तो माइंडफुलनेस हमें वो सोल वाले स्टेट में लेके जाता है, हायर कॉन्शियस तक लेके जाता है। ये एक और बेनिफिट सोल का है। आई थिंक मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ पे ये बात करनी चाहिए। और Thank you very much, sir. No, you were not out of the topic. You were very well articulated, and you very well elaborated on mindfulness, some applications and some examples. And I love that you took reference from personal and professional life about the higher consciousness. It was very important. Congratulations. You were absolutely outstanding. Very well answered. अब मैं आपको कुछ शेयर करता चलूं कि what do I think about the goal ऑफ माइंडफुलनेस। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हमारा गोल क्या है माइंडफुलनेस का। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जस्ट यू कंसिडर वो, क्योंकि देयर आर आई थिंक लेवल्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड दीज मेंटल इश्यूज। उसके एक्सट्रीम लेवल भी हो सकते हैं, लोअर लेवल भी हो सकते हैं, और मिडिल लेवल भी हो सकते हैं। तो मेरा अफसर आपसे ये क्वेश्चन है कि जस्ट कंसिडर समवन जो कि एक्सट्रीम डिप्रेशन से गुजर रहा है, who's having a very rough phase in his or her life. What can that person do to sort of recuperate or recapture happiness, awareness, and present moment? What can that person do? क्या उससे प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, या उससे क्या करना चाहिए? वो पहली चीज कौन सी दैट ही और शी कैन डू इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम depression and anxiety? That's the question. Over to you. that's really a very important topic. I think we can do another detailed session on it also, but right now I'm telling about it in brief. If someone suffering from severe depression or severe anxiety, one thing I mentioned here that if someone with severe depression is a strong risk of suicide, so we have to, हमें जो है ना उसकी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। क्यों? इसकी वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क है उसका खुदकशी करने का, जो सीवियर डिप्रेशन में या सीवियर एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि उनके वो जो सिम्टम पेश आते हैं, वो अपनी लाइफ को वर्थलेस समझते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं कि ऐसी लाइफ से अच्छा है मौत आ जाए, ऐसी लाइफ का ज़िंदगी से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये होपलेस, वर्थलेस, नाउमीदी वाले, जो एहसास से कमतरी वाले बातें जब होती हैं, तो ये जो है ना
आस्ता आस्ता बढ़ते 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 उनके अंदर जो है ना फिर एक लावा का तरह फट जाते हैं और खुदकशी की शिकल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये एक चीज, मतलब आई एम सॉरी टू से कि डिप्रेशन इज वेरी सीरियस। डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारे दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर जिसे हम केमिकल्स कहें, जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जिसे हम सीरोटोनिन कहते हैं। तो सीरोटोनिन की जब लेवल कम हो जाती है, जब वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करते हैं, तो जो सीरोटोनिन क्या करता है, हमारा मूड को हैप्पी करता है। लेकिन सीरोटोनिन जब कम हो जाता है, काम नहीं करता, हमारा मूड क्या होता है, सैड हो जाता है, हम मायूस होते हैं। तो ये उन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से है। नो डाउट साइक काउंसलिंग हेल्प करती है, नो डाउट मेडिटेशन हेल्प करती है, नो डाउट रिलीजियस जो मंत्रा है, जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो हेल्प करती हैं। तो बट जब तक उसका दिमाग उस जगह पे नहीं है, वो केमिकल्स ऊपर नीचे इम्बैलेंस है, वो मेडिटेशन के लिए या माइंडफुलनेस के लिए क्या चाहिए, बंदे को सुकून से एक जगह पे बैठना चाहिए। जब उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, वो कहाँ से एक जगह पे बैठ पाएगा, रेस्टलेस होगा जो बंदा केमिकल की वजह से, इरिटेशन उसकी हाइट पे होगी। वो जब तक हम उस चीज़ को पहले बैलेंस ना करेंगे, तो तब तक वो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस में कैसे आएगा। तो फॉर दैट वी नीड, हमें जो है ना स्पेशल साइकाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करने चाहिए जो रिकमेंडेड हो एज के वाइज से, उसकी साइड इफेक्ट वगैरह देख के कि मेरिट है, अनमेरिट है, वेट गेन है, वो सारी चीज़ें देख के साइकाट्रिस्ट उसको एक स्पेसिफिक एंटी डिप्रेशन देगा। वो 3 हफ्ते के बाद अपना असर शुरू करेगी। जब उसके सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे, मतलब अराउंड 1.5 मंथ के बाद, फिर जाके हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन या अदर जो सीबीटी साइकोलॉजी के कॉग्निशन जो उसकी थिंकिंग बिहेवियर थेरापी जो होती है, उसके सेशन जो है वो बाद में कर सकते हैं, जब तक वो उसका जो एंटी डिप्रेशन उसके माइंड को काम डाउन करे, उसके सिम्टम सबसाइड हो। वो कम से कम, अभी हम उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उन्हें बिठा देता है, उनकी बातें सुनता है। ये तो एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में वो केमिकल के इम्बेलेंस की वजह से, जैसे हमने मूवीज में ये वर्ड अक्सर सुना है, तुम्हारा दिमाग का केमिकल लोचा हो गया है, तो ये केमिकल लोचा है। तो क्या करना है, स्पेशल्स के हेल्प लेनी है। जब उसके सिम्टम सबसाइड हो जाए, उसकी अलामतें कम हो जाएं, फिर हमने उसको माइंडफुलनेस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, डिपेंड अपॉन द कंसर्न साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट। जो कंसल्ट साइकाट्रिस्ट है वो आपको क्या रिकमेंडेड करता है, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन बहुत ही मतलब स्ट्रांग चांसेस हैं सुसाइड के, खुदकशी के। तो हमें इस पे बहुत ही रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमने फ़ौरन ही ऐसे पेशेंट को माहिर अमराज नफ्सियात या साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। दिस इज माय साइड। I mean, very well said, doctor. And I'm grateful कि आज मैंने आपको invite किया on my show because I think it was very important कि हम public awareness raise करें इसके बारे में, और a lot of people have started talking about this, but still, people are not ready to accept psychological issues as a real issue. So it's important कि हम उनको solutions दें. And you very well said कि medical help लेना, professional consultation लेना कोई गलत बात नहीं है. In case someone is suffering from severe or extreme anxiety or depression, he or she can consult with doctor or psychologist. इसी के साथ साथ आई थिंक जो आप अगर अपनी सराउंडिंग्स में भी किसी को देख रहे हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहा है, who's going through lot of self doubt and negative emotions, then please reach out to that person, try to help out and seek out medical help if you see, because हम humans हैं, and I've read this somewhere. It says we humans have this tendency to suicide if we are not happy with our life, or if we do not have a purpose to do anything in our lives. Because see, we're all living because we all think that we have a purpose, but when we lose hope, when we lose purpose, then we start to suicide. So it's important कि हम उनको solutions दें. And you very well said कि medical help लेना, कोई गलत बात नहीं है. And in case someone is suffering from severe or extreme anxiety or depression, he or she can consult with doctor or psychologist.
we don't think that they're, because that's in our human nature. It's part of our human intelligence or emotional intelligence. So we have this inclination to suicide, and इससे तो बड़ा कोई issue नहीं है. तो it's important that we take and medical help. और इसके साथ साथ कुछ जो सर ने डॉक्टर ने हमें कुछ टिप्स बताई, स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ देम. वो आपकी सोशल सपोर्ट हो सकती है, वो आपके कोई भी लव्ड वन आपके करीब हो, उससे आपको सपोर्ट मिल सकती है. यू कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प, बट वी मस्ट do something if anyone is suffering from such issue. The bottom line ye thi, what I have understood from Dr. Sanjay is being in the present moment, loving yourself, and basically being aware of who you are as a person, what are your responsibilities, and what are you really supposed to do. Because once you lose that hope, once you lose that imitation, that orientation to what you are really supposed to do, then it can cause you death, it can cause you suicidal tendencies. So with that being said, thank you so very much, Dr. Sanjay, for giving me your precious time. It was a very productive session with you. मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे कुछ कंक्लूडिंग लाइंस हैं कि अगर हमें एक स्टेट ऑफ अलर्ट एक्टिव करना है अपने माइंड में, और फोकस्ड रिलैक्सेशन डेलिबरेटली हमें अगर प्रिवेल करनी है अपने माइंड के थॉट्स के साथ, तो हमें पहले तो जजमेंटल होना बंद करना होगा. बिकॉज आई थिंक आई एम श्योर कि डॉक्टर संजय भी इससे एग्री करेंगे कि जब हम लोगों के लिए नेगेटिव अफर्मेशंस रखते हैं, जजमेंटल हम हो जाते हैं, बहुत ही नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका अगले पे तो इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन हम पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. वी ऑल्सो सफर because of course we humans are not very much used to negativity deliberately or non-intentionally impact on us, on our health, mentally, and of course physically. With that being said, ladies and gentlemen, thank you so much. Please improve your behavior, please enjoy your life, decrease your judgmental thoughts towards people, and it will reduce your stress, anxiety, or if you're suffering from depression. Thank you so much for watching. You were watching E.Fatima Academy. Don't forget to like, share, and of course, subscribe to this channel if you want more amazing and informative content. Thank you everyone for watching. This is your host, Ali Reza Khan, and you were watching Educatify with Ali Reza Khan. E.Fatima Academy, the online learning platform.